You remember that chapter? Yes, sir. Okay. So let me revise you 5, 6 basic formulae which were used in limits, right? So the first formula is for algebraic functions, if limit extends to a and it's written like x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. So first C, this is an indeterminate form. Indeterminate form बोले तो जिसको आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. If you put x is a, it means that x is tending towards a, means x is equals to a. X is not exactly equals to a. X is either just greater than a, which can be written as a positive. So x is approaching a. Now, if you are approaching any value, let's say this is 1. This is a real number line, minus infinity to plus infinity. Somewhere there will be 1. Okay. Somewhere there will be 2. Okay. If I approach 1, then there are two sides from which I can approach 1. Either I can approach from left hand side, this side, or I can approach 1 from this side, right hand side. Right. So x tends to a means that x is not exactly equal to a, but x is either just greater than a, or just lesser than a. So it can be written in two ways. First is RHL, right hand limit, in which x is tending to a positive. X is a positive. A positive means a plus h. This h value is almost equal to 0. And one thing is LHL, left hand limit, which was a negative. A negative means a से थोड़ा सा छोटा, means a minus h. So whenever you solve limits, you can solve it by two methods. If you are given a question of from limits, you can solve it by two methods. Either you can use direct formulae, which I'll be writing. There are 6 formulae which will be used throughout the limits, or you can use RHL and LHL concept. Okay. So in most of the cases, you will be using these two only. In most of the not in most of the, in almost all of the cases, you will be using these two methods. Either you will go for formula, or you will go for RHL and LHL, right hand limit and left hand limit, right? So before going for continuity, let me make you clear about the formulae part. So this is x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, and this can be written as n into a to the power n minus 1. You put x is equals to a, then the answer is a to the power n minus a to the power n, which is 0, and in denominator as well, a minus a, which is again 0. So if you put x is equals to a in this expression, you will get 0 by 0. Now the indeterminate form says that what should be the answer? If your numerator contains 0, answer is 0, like 0 by 10 is 0, 0 by 100 is 0, 0 by 5 is 0. And if your denominator contains 0, answer is not defined, infinite. So there is a dilemma that what should be the answer? Either it should be 0 or not defined. So there are certain things, there are certain forms, there are certain mathematical expressions which cannot be determined directly. You need to use some formula. So that this is the first formula which is generally used. I'll show you its application. For example, let's say we are given this question, limit x tends to 2, x to the power 4 minus 16 divided by x minus 2. So if you put x is equals to 2, you will get 16 minus 16, which is 0, divided by 2 minus 2, which is again 0. But if you use this formula, so you can write this 16 as 2 to the power 4. Compare it with this. Your n is 4, your a is 2, and power should be n minus 1, which is 3. So the answer should be 32, not 0 by 0. All right. So that's how you can use these formulae. This was the first application. Can you solve this for me? The first question. Try to solve this, which I'm giving you. Yes, sir. Limit x tends to 3. This is x cube minus 8 divided by root x minus root 2.
Sorry, x not x tends to 3, x tends to 2. My bad. If x tends to 3, okay, solve it for both. First is x tends to 3. Then third is limit x tends to 2. In continuity, you will be actually solving limits only. So if you're good with limits, you're good with continuity. There's no other concept. Just a small thing. If you're able to solve limits, you're very good in continuity. You don't need to, do anything extra. Guys, have you solved second? Okay, first of all, can you apply the formula directly? I mean, do we even have a formula form? Like, do we have this? Is this form something standard form? Whatever this second question is written, is this a standard formula? No, sir. I don't think this is not a standard formula, right? So what do you do for the first time when you solve limits? You directly put your limit in the question. This should be the first step. If the answer is coming indeterminate form, then you have to use either formula or RHL LHL concept. And if the answer is not coming indeterminate, then the answer will be there. Whatever you are getting, that is the answer. So in question number 2, if you put x3, you are given that limit x tends to 3. If you put x3 in the question, you're not getting indeterminate form. You're getting some answer, finite answer. So that should be the answer. Okay. So put 3. If you put 3, you'll get 3, 9, 27 minus 8. See, you are not getting any indeterminate form. Divided by root 3 minus root 2. You're getting some finite answer. If you put x is equals to 3 directly, that should be the answer. So it would become 19. Now you can rationalize the denominator. You do not leave any irrational number in the denominator. So you can multiply this expression, multiply and divide this expression by root 3 plus root 2. So this should be root 3 plus root 2. First you will multiply root 3 plus root 2 in the numerator. Then you will multiply root 3 plus root 2 in denominator, which will become root 3 ka square minus root 2 ka square, which would be 1. So the final answer should be so if you are not getting any indeterminate form, then whatever you get will be the answer. Now check question number 3. If you put x is equals to 2, it is giving you an indeterminate form. This answer is not valid. You will get 0 by 0. You have to solve by using some formula, either formula or RHL LHL. But it is very obvious that I haven't taught you RHL and LHL concept yet. So it should be solved by using the first formula only. Now you have to think about how can you apply this first formula in this question. Try to convert it into standard form. Now to convert it into a standard form, what do you need? Let's think about this now. What do you need? You need x cube minus 8. You can solve this by two methods. You can solve this using two methods. Either you can write limit x tends to 2. For x cube minus 2 cube, you need x minus 2 in the denominator. Am I correct? Yes, sir. Right. This is in standard form. This is a standard form. If you are having this, you can apply the formula directly and you'll get your answer. And for root x minus 2, this is like x to the power half
minus 2 to the power half, and this should also be divided by x minus 2. Now see, both of them are standard forms, and you haven't changed your mathematical expression. You have divided numerator as well as denominator by x minus 2, same number, same, expression. So your mathematical expression haven't changed yet, and you can easily apply the formula now. The important part is to understand the application of these formulae. They'll be given like this. They'll not be using directly. They will be using some indirect expression, and you have to think about them. There are 2-3 varieties only, not much. Now the upper numerator will be what? 3, n is 3 here, into 2 to the power n minus 1, a to the power n minus 1, which is 2, divided by, this should be what? N is 1 by 2 here. So 1 by 2 into a, which is 2 again, to the power 1 by 2 minus 1, which is minus half. This 2 will come in the numerator, which will become 6 into 2 to the power. This minus half will be converted to plus half if you take it in the numerator. So 2 to the power is 2 plus half, which is 5 by 2. Or you can also solve this. 2 square is 4. 4 3s are 12. This is 24. So 24 into, this is 2 to the power plus half if you take this in numerator, which is root 2. So first you put the limit directly. If you are getting indeterminate form, you have to use this 6 formula. First, I have already talked about. Do you have any doubt? You can discuss if you haven't understand anything. सर Yes. रूट टू कहाँ से आया? रूट 2 आया, 2 की पावर माइनस हाफ था ना ये, तो इसको ऊपर one लेके by जाएगा तो 2 की पावर प्लस हाफ हो जाएगा। और 1 by 2 का मतलब क्या होता है? पावर रूट ही तो होता है। अच्छा, मतलब रूट को हटाएगा तो पावर 1 by 2 आ जाती है। Sorry. okay sir. Yes, you can ask your doubts, please. Sir, can you please explain again the third one? Yes. So what have we done, Fatima, here? This is x cube minus 8, which can be written as x cube minus 2 cube. And the denominator expression can be written as x to the power half minus 2 to the power half. Now the problem is, our formula says, if you are having anything like this, x to the power n minus a to the power n in the denominator, sorry, numerator, and you are having x minus a in the denominator, then you can use this formula. But you do not have x minus 2 in the denominator. So to solve x cube minus 2 cube, you need x minus 2 in the denominator. First of all, tell me, did you get this? Yes, sir. This x minus 2 is very necessary to solve or to apply the formula. If you don't have x minus 2, you cannot apply your formula. And same is for denominator wala part. Here you have x to the power half minus 2 to the power half, which is something like x to the power n minus a to the power n, which can only be solved if you have x minus a in the denominator. So what have I done is, I have divided both of them by x minus 2, so that we can apply the formula. Right? Okay, sir. Yes, sir. And then find out n a accordingly. So in upper wala part, in numerator, you have n as 3. This is n. Am I correct? Yes, sir. This is a. Yes. So we have put the c n 3 into a to the power n minus 1, which is 2.
Yes, sir. And see, in the denominator, you have n as half and you have a as 2 only. So this should Yes. be n into a to the power n minus 1, which is half minus 1, which should be minus half. So these are calculation wala part. You can do that, but first understand the concept. Yes, sir. Okay. And then after solving, you get the answer. But the important Thank you, part sir. is how to apply the formula. Yeah, no worries. Please note down. Just a minute. So this is the first formula, right? Which is Yes. also known as algebraic limit. Are you saying something? Anyone? No, sir. Okay. So this is the first formula in which you can solve any algebraic function using this rule. Now we have different formulae for different functions, right? Now the second part is for trigonometric functions, and so we have four major types of functions. You'll be seeing them regularly. Should know four formulae, I mean six formulae for four different functions. Okay, just a minute. Give me 1 minute. Okay, so NCRT hasn't given six formulae actually, but you need to understand all of them to understand limits better. So second is limit x tends to 0 sine x by x. Now this is 1. And similarly, third is limit x tends to 0 tan x by x is also 1. So how you can apply them? Now understand this part. Whatever you have inside sine expression, whatever input is given to sine, that should be in the denominator as well. Then the answer is 1. So what I'm saying is, let's say I have this question. Let's solve some examples. Both of the rules will be acting same. So let's say I have to solve this. Solve, question is solve limit x tends to 0 sine 2x divided by x. Now I have 2x with sine, but I have x in the denominator. You cannot apply the formula directly. But what you can do is you don't have any choice. You have to make your denominator same as that of the input of sine. So if you have if you have 2x inside sine, you should have 2x in the denominator. अब होना तो चाहिए 2x, बट है तो नहीं मेरे पास, तो मैं बना दूंगा. मैंने क्या किया, मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा 2 से, ऊपर भी किया, राइट. एंड इफ x टेंड्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो 2x की भी तो 0 ही होगी ना भाई. प्रॉब्लम क्या है? तो क्वेश्चन ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है, सॉरी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा अभी मैं, फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी साइन के अंदर लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और जो भी ये लिखा हुआ है यही वैल्यू टेंड्स टू 0 करनी चाहिए, राइट. तो आपको ये वाला पार्ट तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप छोड़ोगे भी इसको चलेगा, ऐसे ही कर सकते हो, आप इसका आंसर लिख सकते हो, बट आपको ये बहुत जरूरत है कि सेम चीजें बननी चाहिए. तो इसका आंसर हो गया अब 2 इंटू इस पूरे का आंसर इज 1. दिस इज 1.
क्योंकि साइन 2x अपॉन 2x है, सेम चीज होनी चाहिए। तो दिस शुड बी 2 into 1 which would be 2. Let's solve one more. So you have this limit x tends to 0, sine of 3x divided by 2x. Now to solve this, what do you need? If sine contain 3x, then डिनोमिनेटर में भी 3x ही होना चाहिए, बट आपके पास तो नहीं है, तो क्या आप बना सकते हो? हाँ सर। बनाओ फिर, बताओ मेरे को आंसर क्या आया। बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 को हटा दो डिनोमिनेटर से और 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। व्हाट शुड बी द आंसर, ये बता दो मुझे। तो सर आप ये बोल रहे हैं इंटू 2 इंटू 3 ऐसा? ये मेरे 2 कुछ काम करनी है, मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे काम का होता अगर यहाँ पे 3x होता तो, पर है तो नहीं, बट इसलिए बनाना पड़ेगा मुझे 3x। कैसे बना सकता हूँ? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे 3 से ऊपर नीचे। नहीं, नहीं सर, ये साइन x प्लस 2x नहीं कर सकते होता था? नहीं, मतलब कर सकते हैं साइन एक्स प्लस 2x, बट कुछ मिलेगा नहीं उससे भी। फॉर्मूला अच्छा अप्लाई करने के लिए साइन के अंदर जो है वही नीचे ले आ बस। और बहुत इजी काम है ये तो। कांस्टेंट तो हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला ही सकते हैं हमेशा। तो बहुत सिंपल है, बस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे और इस 2 को इधर ले आ, 3 को उधर ले जा। तो ये बन गया 3/2, ये आया और ये आया 3/2, और ये बन गया साइन 3x अपॉन 3x, और ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। फातिमा, ये बात समझ आई? फातिमा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या किया अभी हमने? Yes, sir. हमने बस साइन के साथ जो भी था 3x, तो मैंने 3x बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, sir. जो 3 और 2 है वो बाहर निकाल दिया, ऊपर न्यूमरेटर से 3, क्योंकि उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर वाले 2 की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को बाहर निकाला। एंड देन आई गॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x। सो द आंसर शुड बी 3/2। ऐसे हम यूज कर लेते हैं। सेम गोज फॉर 10x। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, आगे के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। पहले फटाफट इसको नोट करो। क्या मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट रिमूव कर सकता हूँ? Yes, sir. जैन, फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है तो हैंड रेज कर ले। सर लिख लिया। ठीक है। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। और फोर्थ में हमारे पास है सर ये एक्सपोनेंशियल लिमिट। कंटिन्यूटी के चैप्टर में ये क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में? यही आएगा, यही क्वेश्चन है, मतलब तेरे को लिमिट से सॉल्व करना है एक्चुअली। कंटिन्यूटी कैसे बताते कंटिन्यूटी। हैं? मैं कोई भी फंक्शन अगर तुझे बोला जाता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसमें तुझे आरएचएल एलएचएल दोनों सॉल्व करनी पड़ती हैं। 3 चीजें चेक करनी है। अगर तेरे को ये लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी तो आता है पूरा, ये समझ ले। कुछ नया नहीं है कंटिन्यूटी में। लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट को ही बस हम हल्का सा आगे बढ़ा देंगे, तो उससे कहेंगे कि लिमिट्स लगा, सॉल्व कर, देख तीनों वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं। कौन कौन सी 3 वैल्यू की बात करेंगे अभी बताते हैं। बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं बस हम वहीं जो हमें कराना है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो ऊपर बनेगा a की पावर 0 विच इज 1। तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा, 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो आप एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो?
ये बन जाएगा हमारे पास log a बेस e, और अगर इसकी जगह यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है तो आंसर आ जाता है 1। ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एंड लास्ट इज, इनकी जरूरत नहीं है ज्यादा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स की, मैं बस लिखवा दे रहा हूँ क्वेश्चन अगर एक आध कराना होगा तो, बट फोर्थ फिफ्थ सिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की काफी जरूरत पड़ने वाली है। एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाई x, तो इसका आंसर आ जाता है 1। log 1 की वैल्यू 0 अपॉन 0, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट सॉल्व करेंगे तो आंसर बना जाएगा। दिस इज फॉर लॉगरिथमिक लिमिट्स। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं जरा कि हमें क्या करना होता है कंटिन्यूटी के लिए। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, डन एवरीवन? मैं हटा सकता हूँ पूरा। इफ यू आर नॉट डन यू कैन Yes, जस्ट sir. रेज योर हैंड। Yes, sir. Finished. ओके, व्हाट अबाउट जैन? हाँ सर, हो गया। ठीक है जी, चलिए। चलिए, बहुत ही, आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे आ जाइए जरा फटाफट से। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। अब सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, आपको कोई फंक्शन गिवन है, राइट, एंड यू आर टोल्ड टू चेक कंटिन्यूटी। ओके, you are told to check continuity, then what will you do is you will find these three things. So let's say you are given some function y is equals to fx. So I'm writing the concept first. This is hashtag y is equals to, consider y is equals to fx a function consider the continuity of y is equals to fx at x is equals to a। आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में आप एग्जैक्टली देख सकते हो, आपको 3 दिया हुआ है एक ही वैल्यू, क्योंकि आपको बोला गया कि 3 पे कंटिन्यूटी चेक करो, और एक फंक्शन दिया गया है fx जिसका एक्सप्रेशन भी बताया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है जी। हो सकता है आपको फंक्शन इतना आसान दिया गया हो जितना सेकंड में दिया हुआ है, या फिर हो सकता है फंक्शन थोड़ा टफ देना शुरू कर दें, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में दिया गया है। ठीक है। दोनों तरीके का क्वेश्चन करा देता हूं, पहले बेसिक से शुरू करेंगे, बट काम क्या करना है, कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमें 3 चीजें चेक करनी है। हमें एक तो ये चेक करना है, लिमिट फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि a पे RHL चेक करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। a पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा, आप इसको नेक्स्ट, देखो ये स्टेप है बिल्कुल यही है, इसका मतलब है x टेंड्स टू a पॉजिटिव का, अभी मैंने आपको बताया था a प्लस h। तो अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h की वैल्यू 0 है, f ऑफ x की जगह आप रख दोगे a प्लस h। बिल्कुल रटे रटाए स्टेप, यही करना है हर बार, इससे आप यहीं पे ही पहुंचोगे। अगला ये करना होगा आपको, दिस इज RHL, नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट LHL which would be a negative. What does a negative mean is x is equals to a minus h, where h is again up tending to 0,
and then you will have to find LHL. So you will be getting limit h tends to 0 and put a minus h in place of x. Replace x with a minus h and fa. यानी कि directly put that value into the function. So find RHL, LHL, and value of the function at that given point, right? And if they all are equal, if limit x tends to a positive fx is equals to limit x tends to a negative fx, यानी कि RHL, LHL, and value of the function at given point are equal, then the function is said to be continuous. अगर ये तीनों चीजें सेम आती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए फटाफट. Then fx is continuous at x is equals to a. Now let's solve question number 2. You are given fx is equals to 2x square minus 1 at x is equals to 3. You have to check the continuity of this function fx at x is equals to 3. Now, whenever you are asked continuity, you know there are two things. There are three things which you need to solve. The first is you will have to find LHL, then RHL, and then value of the function at given point. So let's find value of the function, yani ke f3. Let's find first of all fa. A is 3 here. So first of all, find f3. What is f3? It is 2 into 3 square minus 1. 3 square is 9, 2 is 18, minus 1, 17. So f3 is 17. This is your first value. Now you will have to solve LHL and RHL. Just write RHL at x is equals to 3. So this should be limit x tends to 3 positive, some value just greater than 3 positive of fx. हर बार आपको ऐसे सॉल्व करना है. ए कुछ ना कुछ दिया होगा, ए पॉजिटिव लगाओ. अगले स्टेप में आप इस 3 पॉजिटिव की जगह 3 प्लस एच लिख देंगे, यानी कि ये बन जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एच, जहां पे एच क्या है, टेंडिंग टू 0. अब एफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या बनेगी, आप इसमें रख सकते हैं एक्स की जगह 3 प्लस एच, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स की जगह आपने रखा 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1. हाँ जी, पहले तो यहीं पे रुक जाइए, बस इसके बाद कुछ नहीं है. पहले आप यहां तक मुझे बताइए कि डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू सॉल्व आरएचएल. आरएचएल माने राइट हैंड लिमिट. जो भी वैल्यू पे आप कंटिन्यूटी निकालना चाहते हो, जस्ट उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो, which can be written as a positive. See, a positive. A was 3 here. You have to find the continuity at x is equals to 3. So you have taken 3 positive, which is 3 plus h. और आपने ये वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर दी. नो, अब भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछो पहले. ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. 0 पुट करेंगे, देखेंगे आंसर फाइनाइट आ रहा है क्या. जैसे आपने h को 0 पुट किया तो ये बना 3 स्क्वायर 9, 9 into 2 18, 18 minus 1 is 17. So the answer is finite. This is the answer.
अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा होता तो फिर हम सॉल्व करते। चलो आप पूरा नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिए। अगर कर चुके हैं तो बता दीजिएगा मुझे कि हम नोट हो चुके हैं। एंड आस्क मी योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। सेम LHL निकालेंगे। LHL माने तो 3 नेगेटिव, यानी कि 3 माइनस एच रख देंगे x की जगह। तो यहीं पे यहां से देख सकते हैं, यहां पे बस 3 माइनस एच हो जाएगा। h को 0 रखेंगे, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से वैल्यू 17 आएगी, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 3। ये बात की बात है, आप पहले स्टेप बाय स्टेप यहां तक आओ, सिर्फ RHL तक। RHL LHL सॉल्व करना सीख गए तो मतलब कंटिन्यूटी आ गई। अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अभी ये जो फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूले भी लगाने पड़ सकते हैं हमें। देखो अभी सिखाते हैं कैसे लगा सकते हैं। हाँ जी, डन एवरीवन। सिर्फ आप हैंड रेज कर लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। अगर लिख लिया तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम अज्यूमिंग इफ यू आर नॉट स्पीकिंग दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन। हाँ, यस। एंड जब भी हो जाए फातिमा तो जस्ट आई मीन डाउन योर हैंड, आई विल गेट टू नो के तुमने लिख लिया है। सर हाँ जी, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना, फिर से बोल। डिफरेंशिएबिलिटी ये सेकंड वाला पार्ट। नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी में RHL नहीं बोलते, उसको RHD बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। नहीं 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 सर, वो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स ये दोनों रिलेटेड है ना? डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन रिलेटेड है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं रिलेटेड है। नहीं related। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बिल्कुल आने चाहिए तेरे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए। जो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना मैंने एक दिन तेरे को क्लास के अंदर जी डिफरेंशिएशन जी। के, वो सारे रूल्स और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का रोल नहीं है। ओके सर। Then there is a difference between differentiation and differentiability. डिफरेंशिएशन माने के तुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी माने के तुझे ये चेक करना है कि क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सर ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ये जो मोस्ट क्वेश्चंस कंटिन्यूटी से आता है डिफरेंशिएबिलिटी पेपर में? डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं आता एक भी क्वेश्चन, कंटिन्यूटी से ही आता है सिर्फ। तू कंटिन्यूटी अच्छे से कर ले। दो और क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, तीनों क्वेश्चन को सही से समझ ले। जो आगे दो क्वेश्चन वो कराऊंगा उसी में से ही एक तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तेरा पेपर में। नहीं, क्योंकि वो खाली 6 चैप्टर्स है ना, तो इसलिए। नहीं नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी तब भी नहीं पूछा जाता, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दिया नहीं एनसीईआरटी में, बहुत डिटेल में नहीं दिया। तो डिफरेंशिएबिलिटी पूछा ही नहीं जाता कभी भी, कंटिन्यूटी ही पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है, तीन तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ये तो सबसे इजीएस्ट वाला कर रहे हैं अभी हम, पर आगे के जो दो क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जैक्टली उनमें से उठ के एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा सर, तो डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं आएगा क्वेश्चंस या आ सकता? नहीं आएगा डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन से आएगा। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, ये जानना है। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है यार, कुछ उन्होंने बस नाम लिख के दे रखा है, कुछ पढ़ाया ही नहीं है तुम्हें उसके बारे में। 11th में पढ़ाया है इनफैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी, RHD LHD, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके Sir, सर। I have written. हाँ ओके, चलिए जी। तो आपने निकाला सेकंड पार्ट, अब आते हैं जरा LHL पे। तो LHL एट x इज इक्वल्स टू 3, बताओगे कैसे क्या होगा LHL? आई मीन कैसे लिखूं, थोड़ा ये बताओ। लिमिट एक्स एक्स माइनस एच ना, x टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3। 3 नेगेटिव ऐसे बोल fx, है ना? सबसे पहले तो यहां Yes, से sir. शुरू होना चाहिए हर बार। अब नेक्स्ट 3 नेगेटिव का मतलब 3 माइनस 3 एच माइनस ना। एच, तो आप x की जगह रख दो 3 माइनस एच।
और जहां पे h क्या है, लगभग 0 के बराबर। अब ये fx आपके पास था ऑलरेडी, 2x² माइनस 1। तो आप x की जगह क्या रख दोगे इस बार? हाँ जी बताइए, x की जगह क्या रखेंगे इसमें अगर ये सॉल्व करेंगे? 0। नहीं नहीं, x की जगह तो 3 माइनस h रखेंगे ना। देन अच्छा 2 इंटू एक्स स्क्वायर था fx का वैल्यू। अब तू fy लिखना चाहता है मान ले इससे, तो ऐसे ही तो लिखेगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। भाई अगर fx दिया हुआ है और आपसे बोला fy लिखो, तो क्या करा? x को जगह y कर दिया बस। आपसे बोला f2 निकालो, तो क्या करा? बस इस वेरिएबल की जगह 2 रख दी वैल्यू। तो अगर आपसे बोला कि 3 माइनस एच निकालो, तो क्या किया? जहां भी वेरिएबल है उसकी जगह 3 माइनस एच रख दिया। यहां पे वेरिएबल है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? कोई डाउट? प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, अब आप h को 0 रखिए। जैसे आपने h को 0 रखा तो ये बन जाएगा 3 माइनस 0 यानी कि 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये बता रहे हैं RHL at x is equals to 3 is equals to LHL at x is equals to 3 is equals to F3, जिसका मान्य fx is continuous at x is equals to 3। तो ये होगा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको एक फंक्शन दिया, हल्के हल्के में ने चेक कर लिया। बट ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं है, तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने कि क्वेश्चन में काम क्या करना है इसलिए कराया है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कोई भी हो निकालना ही है, RHL LHL FA। चलिए एक बार 6th सॉल्व करते हैं। अब देखो इसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, 6th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इस तरीके के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज, PIECE, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज मतलब पीसीज में बटा है फंक्शन। देयर आर मोर देन वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फंक्शन। जैसे कि fx के 2 एक्सप्रेशन है 6th क्वेश्चन में, जैसे कि 7th क्वेश्चन में fx के 3 एक्सप्रेशन है। डू यू गाइस हैव एनसीईआरटी राइट नाउ? फातिमा एंड जी जय? सर। Yes, sir. ओके, तो जस्ट अ मिनट। Guys, just give me a minute. I'm coming. Yes, sir.
Hanji, yes. So piecewise function is something like, for example, fx is equals to 2x plus 3 and 2x minus 3. 2x plus 3 when x is lesser than equal to 2 and when x is greater than 2. तो सबसे पहले तो understand what a piecewise function is. So piecewise function मैं बता चुका हूं. fx has, fx is defined by more than one fx is defined by more than one mathematical expression. Guys, just a minute. For example, this is a piecewise function, right? हाँ जी, तो piecewise function is something like this, ठीक है, जहां पे भी आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ज्यादा से fx को डिफाइन करा जाए, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? हाउ डू वी सॉल्व दिस? सो लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट f3. f3 माने तो आपने x की जगह 3 पुट कर दिया, तो क्या आप मुझे आंसर बताओगे f3 का क्या होना चाहिए? नो 3 आप कहां पे पुट करोगे, यहाँ पे या यहाँ पे? 2x minus 3. कौन सी में जैन? 2x minus 3. 2x माइनस 3 में सेकेंड एक्सप्रेशन वैलिड होगा जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 2. So if you are solving f3, you will have 2 into 3 minus 3, which is 6 minus 3 is 3. Now try to solve this f1. Where would you put x is equals to 1? Fatima, will you tell me where would you put x is equals to 1, in the first expression or in the second expression? This is x is equals to 1, which is where will you put this x is equals to 1, in which expression? Okay, so try to understand what you are putting. Now the value is greater than 2 or less than 2. This is the condition, na? Yes, This sir. is the condition which is defining fx. So fx is 2x plus 3 if x is less than equal to 2. If you put any value less than or equal to 2, you will choose this expression as fx. But if you take any value greater than 2, then 2x minus 3 is your expression. So when I wanted to find out f3, I have put this in 2x minus 3. I have put x is equals to 3 in 2x minus 3 because it was valid whenever x is greater than 2. But if I want to calculate f1, yani ke I have to put x is equals to 1. So I'll put here, it should be 2 into 1 plus 2 3. into 1 plus 3. Yeah, so the answer should be 5. It is 5. Did you get it now? Yes, How sir. would piecewise function behave? Cool.
हाँ जी, तो अब एक छोटी सी बात और समझ लो, जब भी आपको पीस वाइज फंक्शन दिया जाएगा और डिसकंटिन्यूटी की बात करी जाएगी, तो उस पॉइंट पे करी जाएगी जहां पे फंक्शन ब्रेक हुआ है। जैसे कि ये फंक्शन 2 पे ब्रेक हुआ है, 2 से पहले कुछ और है, 2 के बाद कुछ और है। तो अगर आपसे बोला चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सिर्फ इस पे जाएंगे बस, और कहीं नहीं, सिर्फ उस पॉइंट पे जहां पे फंक्शन ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। We were told that find all points of discontinuity of f, where f is defined by the first question, f is this. Can I remove this? Have both of you did it? Sir, just 1 minute. Yeah, sure. Please write it. I'll be taking 1 minute. Actually, I'm alone at my place and my cook has already arrived. Just 1 minute. हाँ जी, डन। Yes, sir. ठीक है, तो हमें बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन fx, which is defined by 2x plus 3 if x is lesser than equal to 2, and defined by 2x minus 3 if x is greater than 2. Okay, now I have already told you, if you have been asked for continuity or discontinuity, you just need to check at the point the function is breaking. So you just need to check whether this function is continuous at x is equals to 2 or not. If it is, then the function is continuous at any real number. If it is not continuous at x is equals to 2, then there is one point of discontinuity, which is x is equals to 2. Right? So what should I do now? I'll solve RHL, LHL, and F2. RHL at x is equals to 2. I'll have to find these three things. LHL at x is equals to 2. And F2. Can you tell me this third value? Please help me to solve this. What is F2? Okay, where would you put 2? Here or here? You just have to check this. Which expression is valid for x is Both. equals to 2? Not Both. both. No, not both, Jen. How can that be possible? Only one should be the answer. You have In been the given. second one, Why second one? Like, how did you identify? I just want to ask this. So 2x plus 3. 2x plus 3, because when x is 2, the first expression is valid, right? The first expression is very yes, sir. explicitly mentioned that if x is less than or equal to 2, the expression is 2x plus 3. So to find f2, you can use your 2x plus 3 wala expression, right? Because whenever Yes, x is sir. 2, this is valid. So f2 is 7. ये तो सबसे easy होता है, इसको आप सबसे पहले find out कर लो. Now let's solve
RHL and LHL at x is equals to 2. Now to solve RHL at x is equals to 2, you need to solve limit x tends to 2 positive fx, which should be limit h tends to 0 f of 2 plus h. To solve LHL, you sorry. Now, what do you need to identify is what is 2 plus h? This is a value which is just greater than 2. Am I correct? Just greater than 2, 2.00001. And what is 2 minus h? This is a value just smaller than 2, like something like 1.999999. So whenever you want to calculate f of 2 plus h, you are putting a value which is greater than 2. So you should use this expression. Value is x is greater than 2 here. So the answer should be limit h tends to 0. F of 2 plus h should be 2 into 2 plus h minus 3. Right. And here it should be limit h tends to 0. Now this is 2 minus h. So certainly x is less than 2. So this expression should be used. 2x plus 3. 2 into 2 minus h plus 3. बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप था. ये बात अगर आप समझ जाएं कि यहां से यहां पे कैसे आए हैं और यहां से यहां पे कैसे आए हैं, देन यू आर सॉर्टेड. जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई. आपने सबसे पहले पीस वाइज फंक्शन समझा किस तरीके से डिफाइन करा गया है. अगर x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है, 2 से बड़ी होगी तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है. यहाँ पे 2 से बड़ा रख रहे हैं तो इसमें रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से छोटा रख रहे हैं तो इसमें रखना पड़ेगा वैल्यू. फातिमा एंड Zen, is it clear? Yes, sir. Zen? Yes, sir. बस यार हो गया सॉल्व. अब आप h की वैल्यू रखो. जब आपके h की वैल्यू 0 रखी तो ये बना 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1. अब सेकंड में गए. सेकंड में आंसर क्या आया? h को 0 रखो. h को 0 रखा तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7. सी RHL इज, या इस चीज को एक्चुअली हमें ऐसे लिखना चाहिए. अब देखो इस बार अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. RHL इक्वल नहीं है LHL के, और ना ही इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के. Hence, fx has one point of discontinuity हाँ जी, बात समझ आई क्या? कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब इस तरीके का कोई भी. सॉरी. हाँ जी, इज इट डन? ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई नहीं, अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस. मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरी अभी क्लास भी है दूसरी, बट मैं आपको 2 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ. एक है 10th क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड वन इज 17th. ये 2 क्वेश्चन अभी करने हैं आपको. यू हैव 5-10 मिनट्स. ओके, यू हैव 5-10 मिनट्स. यू बोथ हैव एनसीईआरटी राइट, और शुड आई राइट द क्वेश्चन? Sir,
है हाँ जी, आंसर ठीक है, सेट यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 5-10 मिनट्स हैं, इजी करो आप, इसको सॉल्व करो। और ये दोनों क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करने, मतलब अभी आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। जो 17th क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टू सॉल्व दिस आई एम हियर, मतलब if send me anything on chat, okay, I'll be available. You can start solving 10th and 17th.
हाँ जी, 10th किया सॉल्व? Yes, sir. अच्छा, हुआ सॉल्व है? Okay, let me solve this video. I mean 10. So what was 10 was before? 10th is x plus 1 and x square plus 1. Okay. So fx is x plus 1 and x square plus 1 depending on x. First is when x is less than or equal to 1. Second is x greater than 1. So LHL, you need to find out these three things. RHL and F1. What is the value of F1? What is the value of F1? 2. Yeah, correct. So this should be used as 1 plus 1 in this, because x is equals to 1 should be put in this, x plus 1. This is 1 plus 1, which is, now LHL is, I'm not solving all the part, I'm just helping you out with the answers. So LHL at x is equals to 1 is limit x tends to 1 negative fx, which you would get, I'm putting it correctly, I'm skipping some steps. So this would be 1 minus h plus 1. If you put h 0, the answer would be. Now RHL at x is equals to 1 should be limit x tends to 1 positive fx, which should be limit h tends to 0. 1 positive is 1 plus h, so this should be 1 plus h whole square plus 1. The answer would be 2 again. All of these are 2, hence the function should be continuous or discontinuous? Continuous. Continuous. So this is all continuity is all about, I think. Now the important part is to find the value of a and b in 17th question. So what will you get is, you will get first equation in terms of a or b, you will get second equation in terms of a and b, and you will get third equation in terms of a and b. Solve any two of them and you will get all the answers. You will get a and b. Okay, this is your homework. Okay, we'll discuss this in the tomorrow's class. चलिए फिर ठीक है. I'll have another class, so I should rest for 10-15 minutes. Otherwise, I will not be able to take class. सर एडिशन का क्या करना? Addition? एडिशन अलजेब्रा का ना? क्या बोलना चाहता है जैन? किसी बता. I did not understand. देखिए कैसा 21st क्वेश्चन, ये sin x plus cos x. 21st. कोई दिक्कत नहीं है. 21st में भी. अच्छा. इसमें हम ये रूल लगा, इसकी जरूरत नहीं है जैन, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, बट इसमें हम, मैं तेरे को छोटा सा बात बता देता हूँ कि अगर fx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, तो fx प्लस gx और fx माइनस gx दोनों कंटिन्यूअस होंगे. क्योंकि sin x पूरा कंटिन्यूअस है, cos x भी पूरा कंटिन्यूअस है, sin x प्लस cos x भी और sin x माइनस cos x भी दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे. पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 17 क्वेश्चन सही से तैयार कर ले, बस इतना बोलूंगा मैं. और इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन और लगा. ये 30th वाला क्वेश्चन कैसा करना? कौन सा? 30th वाला कौन सा? तीन है, सो 5 8 to 21 वो वाला. हाँ, 30th 23 इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है और 26 इंपॉर्टेंट है. मैं मार्क करा देता हूँ कुछ क्वेश्चन, ये सारे सॉल्व करके लाने हैं.
26 to 30, 34, 26 to 30, 34, 23, 24, 25, 18, 17. दोबारा बोल दे रहा हूँ एक बार, 17, 18, 19, 23 से लेके अप टू 30 और 34. ठीक है जान, जी सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल. ये डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है, क्या बोले ना, नहीं वो करना बोल के इम्पोर्टेंट नहीं है? डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत नहीं है अभी तेरे को, बस तू कंटिन्यूटी कर ले सबसे. बिल्कुल सब एप्लीकेशन डेरिवेटिव सेम अच्छा डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की से, जो फॉर्मूले ओके तो सर। उनकी जरूरत पड़ेगी, वो याद कर लो. फर्स्ट डे क्लास में मैंने तेरे को लिखवाया था. अच्छा सर। चलो ओके. जी सर, मैं क्लास खत्म करना जाता हूँ। हाँ जैन लीव कर.